Hello everyone. Today we are going to learn about moving coil galvanometer, that is MCG. Now as you all know, moving coil galvanometer is a device which is used to detect a very small amount of current. In the entire session, what we are going to learn? We are going to learn the assembly and procedure of our moving coil galvanometer. So let us start with the assembly part of our moving coil galvanometer. Now moving coil galvanometer, the first thing which it has is a central cylindrical core. मतलब सेंटर में एक सिलेंड्रिकल कोर है which is made up of a material called as soft iron, इसलिए उसको नाम दे दिया that is soft iron core. Now once we have drawn a center cylindrical core, after this we are going to draw a head at above it, that is torsional head. तो इसको हमने नाम दे दिया that is torsional head H. Now after drawing our torsional head H, we have drawn a wire. एक वायर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया और उस वायर को नाम दे दिया फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और फॉस्फर ब्रॉन्ज फाइबर. Why it is called as phosphor bronze strip or phosphor bronze fiber? Because it is made up of a material that is phosphor bronze. Now after this wire is extended and it is winded vertically over our cylindrical core. अभी vertically wind करेंगे इसको, मतलब इसको ऐसे wind कर दिया हम लोग ने. Now once it is vertically wind, this core can easily move or it can easily get deflected over our core. Means you can see, मतलब easily वो move कर सकता है हम लोग के core के ऊपर या core के साथ move कर सकता है. Now once we are done, we are going to name it as coil. इसको हम लोग ने coil का नाम दे दिया. Now once we are done with the coil, after this we are going to attach a spring below. नीचे हम लोग ने एक spring लगा दिया. इस spring को हम लोग नाम देते हैं that is hair spring. तो हम लोग ने स्प्रिंग को नाम दे दिया that is hair spring. Once it is done, इसको एक लोअर कनेक्शन में हम लोग ने लगा दिया. लोअर कनेक्शन को हमने रख दिया on a support. So if you are going to see, इतना तक हम लोग ने कंप्लीट कर दिया. Once we are done with the support, उसके बाद we are going to take two magnets, that is north pole of the magnet and south pole of the magnet. तो इसको हम लोग ने नाम दे दिया that is poles. Once we are done with the pole, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक मिरर लगाएंगे. इस मिरर को हम लोग नाम देंगे प्लेन मिरर. एक बार हम लोग ने प्लेन मिरर लगा दिया, दो पोल्स रख दिया. अब ये दो पोल्स को लाके हम लोग अटैच कर देंगे. अगर हम लोग इसको अटैच करेंगे, मतलब ये आके इधर अटैच हो गया. So here we have completed the entire assembly of our moving coil galvanometer. अभी एक बार हम लोग का assembly complete हो गया of moving coil galvanometer. Now after this, let us understand the procedure. Let us first take the explanation of the procedure. Later on we'll see the PPT or we can see the animation of that procedure. Now as we have our two magnets, that is north pole and south pole, when I pass a current through my moving coil galvanometer, what happens is the current starts flowing through the entire coil of my moving coil galvanometer. अभी पूरे के पूरे coil से ये flow होना start हो गया. जैसे ही flow होना start होगा, my magnetic lines of force will travel from north pole of the magnet towards the south pole of the magnet. अभी जैसे मेरा magnetic lines of force travel होगा from north pole of the magnet towards the south pole of the magnet, what it will do, it will act a force on perpendicular sides of the coil. Remember, perpendicular sides of the coil. Coil का जो perpendicular sides है उसमें force apply होगा. Now these force will be equal in magnitude but opposite in direction. The force which are equal in magnitude and opposite in direction produces a torque. टॉर्क प्रोड्यूस होगा. टॉर्क की वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा. पूरा का पूरा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा. नाउ दिस torque is deflecting my coil. That is the reason I am going to name it as deflecting torque. जैसे ये डिफ्लेक्ट हो गया, मेरे को गैल्वेनोमीटर में क्या मिलना स्टार्ट होगा, रीडिंग. एक बार मेरे को रीडिंग मिलना स्टार्ट हो गया. सो प्रैक्टिकली व्हाट वी हैव सीन, एक बार नीडल ऊपर गया, एज सून एज वी स्टॉप आवर करंट, नीडल अगेन कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. यस, अगेन इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अभी ओरिजिनल पोजीशन में कौन लेके आएगा, जो हम लोग ने
स्प्रिंग अटैच किया है। अभी जैसे ही हम लोग का कॉइल घूमेगा, कॉइल के साथ कौन घूमेगा? हम लोग का स्प्रिंग। वी ऑल नो, अगर हम लोग ने स्प्रिंग को घुमाया, छोड़ दिया, वापस क्या होता है? इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब क्या? एज सुन एज माय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, इट अप्लाइज अ फोर्स ऑन द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द कॉइल। जैसे ही फोर्स अप्लाई होगा ओवर द परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द कॉइल, क्या होगा? एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इस टॉर्क को हमने नाम क्या दिया? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हम लोग को क्या मिल गया? एक रीडिंग। अभी क्या होगा? स्प्रिंग भी साथ में घूमा है, अभी स्प्रिंग विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स पोजीशन। मतलब स्प्रिंग वापस घूमेगा तो वापस क्या करेगा? कॉइल को भी घुमाएगा एंड आवर नीडल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एज स्प्रिंग इज ब्रिंगिंग आवर नीडल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वी आर गोइंग टू नेम इट एज रिस्टोरिंग टॉर्क। मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? पहले हम लोग को मिलता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, फिर हम लोग को मिलता है रिस्टोरिंग टॉर्क। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एन एनिमेशन। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? आवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू आवर कॉइल। एज यू कैन सी, हम लोग का करंट फ्लो हो रहा है थ्रू आवर कॉइल। इस करंट को हम लोग ने नाम दे दिया, दैट इज आई। As our current is flowing through our coil, our magnetic lines of force is traveling from north pole of the magnet towards the south pole of the magnet. Now you can see इधर हम लोग को क्या प्रोड्यूस हुआ? एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोग का प्रोड्यूस हुआ, हम लोग को क्या मिलेगा? इफ यू कैन सी दिस गैल्वेनोमीटर, हम लोग को इस गैल्वेनोमीटर में मिलेगा दैट इज अ रीडिंग एंड वी गेट रीडिंग थ्रू आवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर असेंबली and procedure of our moving coil galvanometer. I hope you have understood this entire explanation. If you like our video, do subscribe it. Thank you.